Prime Minister Narendra Modi said that the motto of good for all is deep-rooted in Indian culture. Flanked by Sri Lankan President Maithripala Sirisena, Prime Minister Modi said that a holier-than-thou attitude is taking people towards conflicts. Prime Minister Narendra Modi, while addressing the Vichar Mahakumbh in Ujjain, said that change should take place, otherwise life becomes mundane. Prime Minister Narendra Modi on Saturday visited Ujjain to take part in the Vaicharik Mahakumbh as part of the ongoing Kumbh Mela in the city. The Prime Minister was accompanied by Sri Lankan President Maithripala Sirisena and the Chief Ministers of Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Maharashtra at the event. Vichar Mahakumbh, a confluence of interfaith spiritual leaders, also came out with a Singhasta declaration. The declaration has 51 auxiliary points derived after intense brainstorming, which will start a new discourse not only in India but around the world. देश और दुनिया के इस विषयों के जानकार लोगों ने मिलकर के 2 साल मंथन किया है, साल भर विचार विमर्श किया है और पिछले 3 दिन से इसी पवित्र अवसर पर ऋषियों, मुनियों, संतों की परंपरा को निभाने वाले महान संतों के सानिध्य में इसका चिंतन मनन हुआ है और उसमें से ये 51 अमृत बिंदु समाज के लिए प्रस्तुत किए गए हैं. Prime Minister Narendra Modi, while addressing the Mahakumbh in Ujjain, said that change should take place, otherwise life becomes very mundane. He also said that India has been an all-inclusive society and it is our global duty to bring everyone together and connect everyone. हम सबको जोड़ने वाले लोग, ये सबको जोड़ने का हमारा सामर्थ्य है, ये कहीं कमजोर तो नहीं हो रहा. अगर हम कमजोर हो गए तो हम जोड़ने का दायित्व नहीं निभा पाएंगे और शायद हमारे सिवा कोई जोड़ पाएगा कि नहीं पाएगा ये कहना कठिन है. इसलिए हमारा वैश्विक दायित्व बनता है कि जोड़ने के लिए भी हमारे भीतर जो विशिष्ट गुणों की आवश्यकता है उन गुणों को हमें विकसित करना होगा. In his address, Prime Minister said that in this Mahakumbh, saints and scholars have made efforts to find ways for the welfare of mankind in the present times. उज्जैन के इस कुंभ में संतों के आशीर्वाद से एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ और ये नया प्रयास एक प्रकार से उस सदियों पुरानी व्यवस्था का ही एक मॉडर्न एडिशन है. Meanwhile, Sri Lankan President said that India and Sri Lanka have extremely intimate bilateral relationship for centuries. Since our two countries have had extremely intimate bilateral relationship for centuries, I consider this invitation as a firm endorsement of goodwill and friendly attitude to each other. Participating in the Vichar Mahakumbh, Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan said that the 5 elements of nature are integral to Indian culture and these elements inspire us to preserve nature. भारतीय संस्कृति में हम पंच महाभूतों की पूजा करते हैं. ये कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा. शरीर भी बना है और ये जो पंच तत्व है यानी पूरा का पूरा नेचर, ये संपूर्ण नेचर जिसको निसर्ग कहते हैं, इस निसर्ग का भी हमें रक्षण करना है. कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन आवश्यक है. Madhya Pradesh Chief Minister lauded Prime Minister Narendra Modi's effort in a clean India. He especially praised Prime Minister's Swachh Bharat Abhiyan and said Prime Minister has inspired and galvanized the entire country. सचमुच में एक आश्चर्यजनक घटना हिंदुस्तान में हुई है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया पूरे देश को स्वच्छता अभियान चलाओ. उन्होंने झाड़ू थामी तो पूरे हिंदुस्तान ने अपने हाथों में झाड़ू थाम ली और पूरी जनता स्वच्छता अभियान के लिए निकल पड़ी. World leaders of various faiths and religions deliberated on spirituality, science and people's welfare during the convention. Brainstorming of ideas took place with regards to issues like conservation of environment, agriculture, cottage industries, sustainable development and women empowerment.
Around 2,000 scholars from home and abroad, experts from different fields put forth their thoughts so that a roadmap for the future could be made. Bureau Report, DD News. Well, now